میں آ رہا ہوں اس پوائنٹ پہ. ہاں جی. اچھا اب اس کا یہ ہے کہ جی عطا ان کو مل گیا. میں I am only confined to the senators. I am confined to the senators who are the honorable member of this house. یہ ریزولوشن کون موو کرے؟ ایک منٹ سر، آپ یہ کا جواب دے رہے ہیں. 14 اگست کے حوالے سے اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ یوم آزادی کی ریزولوشن نہیں پاس ہونی چاہیے، آپ باہر چلے جائیں، ہم پرسوں کر لیں گے. نہیں، میں عرض کر رہا ہوں I hereby move under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the requirements of Rules 26, 29, 30 and 133 of the said rules be dispensed with in order to enable the House to move and pass a resolution on the National Independence Day, 14 August کے حوالے سے. I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted unanimously. Please move the resolution. Mr. Chairman, with your kind permission, whereas the people of Pakistan commemorate the 78th anniversary of their independence with pride, gratitude, and a renewed sense of responsibility towards the ideals upon which the nation was founded. Whereas the creation of Pakistan was culmination of decades of political struggle, sacrifices, and unwavering determination led by the father of nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and supported by countless freedom fighters, political leaders, scholars, poets, and common people whose steadfast commitment made the dream of a sovereign homeland a reality. Whereas the Senate of Pakistan recognizes and pays special tribute to the distinguished parliamentarians and statesmen who, through wisdom, foresight, and untiring dedication, gave the country its constitution, carried forward democratic reforms, and upheld the principles of parliamentary supremacy, the rule of law, and the protection of rights. Whereas the Senate of Pakistan acknowledges the courage, professionalism, and sacrifices of Pakistan's armed forces, police, and other law enforcement agencies in safeguarding the sovereignty, integrity, and security of the nation. Whereas the sacrifices of martyrs, shuhada, and the courage of the ghazis form the bedrock of Pakistan's freedom, and their legacy continues to inspire the nation's resolve to protect its independence and dignity. Whereas the resilience of people of Pakistan in overcoming political, economic, and natural challenges reflects their unity of purpose and determination to build a peaceful, inclusive, and prosperous state in line with the vision of founding fathers. Now, therefore, be it resolved that the Senate of Pakistan commemorates the 78th Independence Day, honoring the leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and paying homage to all those whose sacrifices made Pakistan a sovereign and independent state. Pay special tribute to the parliamentarians who framed the Constitution of Pakistan and advanced democratic reforms, reaffirming commitment to preserving parliamentary democracy, constitutional supremacy, and rule of law. Extends heartfelt congratulations to all Pakistanis at home and abroad, reaffirming commitment to the unity, sovereignty, and territorial integrity of the Islamic Republic of Pakistan. Commends the armed forces and security institutions for their unmatched valor and sacrifices in defending the nation. Honors the martyrs and ghazis, pledging to preserve and uphold their legacy for future generations. Reaffirms adherence to the principles enshrined in Constitution and the democratic vision of founding fathers. Commits to promoting peaceful coexistence, regional stability, and constructive engagement with neighboring countries, and the globally committing to address shared challenges including climate change, economic inequality, terrorism, and public health crisis, while safeguarding Pakistan's sovereignty.
calls upon all citizens, particularly the youth, to unite beyond personal and political differences and to contribute actively to nation building through education, innovation, civic engagement, and service to humanity. Pledges to strive for sustainable development, economic empowerment, and national unity so that Pakistan may continue to stand as a beacon of hope, dignity, and progress in the community of nations. Resolved further that on this Independence Day, the Senate of Pakistan reaffirms its solemn dedication to protecting the sovereignty of country, preserving its democratic ethos, and building a prosperous future for generations to come, and congratulate the nation on the great achievement and success of Mark-i-Haq. This is also. I now put the resolution. ठीक थोड़ा सा ऑब्वियसली हमारे लिए पाकिस्तान कम्स फर्स्ट और पाकिस्तान का 14 अगस्त का दिन है। सेनेट का एक ट्रेडिशन भी है कि हम हर 14 अगस्त को ये रेजोल्यूशन पास करते हैं, लेकिन मुझे जो अफसोस हुआ वो ये है कि बेहतर ये होता, जो हमारी एक ट्रेडिशन भी है कि सारे जो लीडर्स ऑफ द अपोजिशन हैं उनके साथ ये शेयर की जाती रेजोल्यूशन, तो अगर वो रेजोल्यूशन शेयर की जाती पहले तो हम उसमें शायद अपनी इनपुट दे देते और हम उसको साइन भी करते और एक अच्छा जाता है मैसेज। तो ये सुन तो लिया हमने, मोरलेस वो ठीक होगा, लेकिन बेहतर एक ट्रेडिशन ये थी कि हम सबको साथ लेके चलते। तो अब इसमें इशू ये है सर कि ऑफ कोर्स हम इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट तो करेंगे, जो रेजोल्यूशन हम चाहते हैं, लेकिन अल्फाज बड़े ज़रूरी होते हैं। हम सब पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमें एक एक लफ्ज़ देख के उसमें ऐड करने की या उसको निकालने की या तब्दील करने की और ट्रेडिशन भी है। तो ये आई डोंट नो क्यों ये ट्रेडिशन को नहीं फॉलो किया गया इस वक्त। बहुत सारी रेजोल्यूशन हमने इकट्ठे पास की हैं जहाँ भी नेशनल इंटरेस्ट होता है। शरीर अमान के ज़िम्मे लगाया था, शी इज़ लेट, वो आपसे रब्ता करती। आई थॉट के हो चुका है, मेरा ख्याल है इस चीज़ को कंट्रोल। Heartfelt apologies, अगर ऐसे I was given the impression कि ये एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है और क्योंकि इंडिपेंडेंस डे के हवाले से है और ये हमेशा से ये हमारी रस्म रही है। अभी क्योंकि जब मैं आया हूँ तो सेक्रेटेरिएट ने जो ड्राफ्ट शेयर किया था ये वही है जो माय अंडरस्टैंडिंग इज़ एंड वाज दैट इट इज़ ए कंसेंसस डॉक्यूमेंट, और आपने इसकी लैंग्वेज सुनी भी है। कोई ऐसी अमेंडमेंट अगर आप अभी सजेस्ट करना चाहें तो वो भी सर आँखों पे, लेकिन मेरे ख्याल में सर ये इंडिपेंडेंस डे की एक सारों की बैक आवाज़ है और इस पर आप सबके दस्तखत भी जाएंगे। मैं तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि मुझे फिर एक दफ़ा रीअफर्म कर लेना चाहिए था, बट आई वॉज purely under impression that it is a consensus document, it has been shared and no amendments have been suggested. कि शायद आपसे शेयर हुआ है, अगर नहीं हो सका तो ये ऐसा इशू है जिस पे सिर्फ सर ऐसी चीज़ इसमें है नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी अगर ना लेकिन मैं सर फिर माजरत ख्वाह हूँ अगर ये चीज़ शेयर उस तरह से नहीं की गई। माजरत कर ठीक है।